Hello everyone, welcome to PTE Reorder Paragraph Real Exam Question Series, Reorder Paragraph number 51. It means that we have already discussed 50 highly repetitive and real exam questions, real exam reorder paragraph questions जो students को paper में आ चुके हैं. We have discussed the hacks, tips and strategies how you can solve those reorder paragraphs quickly. First things first, now PTE is accepted in UK, so if you want to study or work in UK, you can do it through PTE, and 90% of universities in Canada now accept PTE academic. And my name is Bhrat Brij. I have scored a perfect 90 in all the 10 skills of PTE. And students often ask, sir, can we also achieve our target score? The answer is big yes. If you are going to follow the same strategies, tips and tricks, there is no reason you can also achieve your target score. So that's why do not forget to subscribe to our channel, because we post such informative videos on a regular basis. And PT reading is of 32 to 41 minutes and it is not scored out of 90. The reading module contributes just 47 marks. It has 5 question types, and today's topic is reorder paragraph, which is the third question type in the order. And this is the real PT reading scoring. As you can see, the 47 marks are coming from these questions. The reorder paragraphs are of 6 marks. So if you are getting 2 reorder paragraphs, they will be of 3 marks each, and every mark is important. You can lose your target score by just 1 mark. So that's why always pay attention to reorder paragraphs. They are the easiest one to solve if you know the right strategies. So in reorder paragraphs, you have to do the time management yourself, and the maximum time you can spend is 2 minutes. And in those 2 minutes, first you have to do the skimming, then you have to apply the strategies, then you have to make pairs, and then you have to confirm the order that the pair which you have made is correct or not. So this is today's reorder paragraph, and as usual, we are going to give you 30 seconds to skim through this. You can fast forward this video to see the explanation. Okay, so I am back. So now you know that first thing we do is we skim the reorder paragraph lines to find independent line, conclusion line, that is your optional. For independent line, there are certain strategies and tips which we apply. Okay, so let's get started. The largest fruit-eating fish are primarily responsible for seed distribution and growth of the wetland habitat. तो क्या आपका ये इंडिपेंडेंट लाइन हो सकती है? यस, हो सकती है. ओके, बिकॉज यहाँ पे देखिए, अब आप स्टूडेंट्स कहते हैं सर लार्जेस्ट द लगा हुआ है, बट ऑलवेज रिमेंबर सुपरलेटिव्स के साथ हमेशा द लग सकता है. सो दिस इज नॉट द रीजन कि आप इसको इग्नोर करेंगे. ओके, सो इसीलिए लेट्स keep it this as an independent line for now. And we are going to use process of elimination. In that, we eliminate the wrong options and we keep the right one. And I always say that process of elimination is your best friend forever. Most plant species in tropical forest are dispersed in this way. This way, kaun sa way, nahi pata. So that's why this cannot be your independent line. The greatest propagators of seeds are the large fish which swallow these fruits, which then pass through their excreta. The greatest, yes, superlative है, जैसे largest है वैसे ही greatest है, तो यहाँ पे independent line में ये the use हो सकता है, but this is not your independent line. Why? These fruits, कौन से fruits? क्या fruits किस line में पहले कहीं described हैं? The answer is no. So this cannot be your independent line. Freshwater fish eat hundreds of plant species. Yes, this seems like independent line. During summers, trees adjacent to the wetlands drop fruit into the water. This cannot be your independent line. Why? Wetlands के साथ the use हो रहा है, मतलब wetlands की बात कहीं हुई होगी. कहाँ हो रही है? यहाँ पे हो रही है wetland की बात.
So that's why this cannot be your independent line also. Now we have two independent lines or probable two independent lines. Now we are going to use our BS strategy, brought to specific strategy, and then जो इनमें से better generic line होगी, that will be our independent line. Freshwater fish eat 100 of plant species. या the largest fruit eating fish. अब आप देखिए यहाँ पे ये जेनरिक बात हो रही है, ठीक है, कि फ्रेश वाटर फिश जो हैं, फिश एक चीज, फिश का प्लूरल भी फिश होता है, फिशेस नहीं होता है। तो अगर मैं यहाँ पे फिश की बात कर रहा हूँ तो सिंगुलर फिश की बात नहीं कर रहा, मैं ग्रुप की बात, थाउजेंड्स ऑफ फिश या हंड्रेड्स ऑफ फिश की भी बात कर सकता हूँ। फ्रेश वाटर फिश ईट हंड्रेड्स ऑफ प्लांट स्पीशीज। ओके, फ्रेश वाटर की जो फिश हैं वो बहुत सारे प्लांट स्पीशीज को ईट करते हैं, और उसमें द लार्जेस्ट फ्रूट ईटिंग फिश, तो आप यहाँ पे देखिए, दैट्स वाई ये फ्रूट ईटिंग फिश एक तरह से स्पेसिफिक हो गया, और यहाँ पे आप जनरल फिश की बात कर रहे हो, तो विच इज मोर जेनरिक, दिस लाइन. सो वी आर गोइंग टू टेक दिस एज आर इंडिपेंडेंट लाइन. अब यहाँ पे now we have to see the pairs. We have these four lines. And remember, based on our SO strategy, subject object strategy, हमने पिछला एक पेयर ऑलरेडी बना चुके हैं, अगर आपको आइडिया हो, वेटलैंड हैबिटेट का. यहाँ पे वेटलैंड हैबिटेट है और यहाँ पे द वेटलैंड्स यूज हो रहा है. ओके, सो इसीलिए आपका बेस्ड ऑन आर SO strategy, this is going to be the pair. But अभी we are looking for the second line. But always remember, we have to make pairs. तो अगर हम पहले pair बना लेते हैं, it can be easy also. अब now we have to see these two lines कहाँ fit होंगी. Most plant species in tropical forest are dispersed in this way. कोई way कहाँ पे दिया हुआ है. Okay, जहाँ पे ये way दिया होगा वहाँ पे आपके ये वाली line उसके बाद आएंगी. The greatest propagators of seeds are large fish which swallow these fruits which then pass through their excreta. अब यहाँ पे आपको ये वे दिया हुआ है. ओके, ये वे है कि जो हैं वो सीड्स कैसे प्रोपेगेट होते हैं. जो लार्ज फिश होती है वो फ्रूट्स खाते हैं, और जो सीड्स हैं वो एक्सक्रीटा से पास थ्रू होते हैं. इस तरह से आपका प्रोपेगेट होते हैं सीड्स. ओके, सो अब ये वे है. सो यू नो दिस इज अ पेयर नाउ. अब क्वेश्चन रहता है कि यहाँ पे दीज फ्रूट्स की बात कहाँ पे हो रही है, राइट? बिकॉज ये इसके बाद आ रहा है, तो अब आपका ये दो का पेयर है और इन दोनों का पेयर है. सो फ्रूट्स की बात कहाँ हो रही है, यहाँ पे ये देखो फ्रूट. सो अब डिपेंडिंग अपॉन आर SO स्ट्रेटेजी, अगेन फ्रूट और फ्रूट्स का पेयर बनेगा. दो आई हैव सॉल्व्ड इट, बट लेट्स डिस्कस वन बाय वन. ओके, सो यहाँ पे ये वाली लाइन, बिकॉज आपका जो लार्जेस्ट फ्रूट ईटिंग फिश, यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो, आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड डिस्ट्रीब्यूशन एंड द ग्रोथ ऑफ वेटलैंड हैबिटेट. ओके, अब उसके बाद हमने इसके साथ कौन सा पेयर था, दिस वन, राइट? क्योंकि वेटलैंड और द वेटलैंड यहाँ पे ज्वाइन हो रहे थे. ओके, सो वी हैव मेड दिस पेयर. अब ये वाला पेयर भी हम बना चुके हैं कि ये वाला यहाँ पे आएगा, बट अब यहाँ पे हमने ये जो पेयर है ये यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा, ये क्वेश्चन था, राइट? सो अब आप देखिए यहाँ पे फ्रूट, यहाँ पे बात हो रही है फ्रूट, और यहाँ पे पहली लाइन कौन सी है, दीज फ्रूट्स. सो SO स्ट्रेटेजी के बेसिस पे दिस लाइन इज गोइंग टू कम ओवर हियर. ओके, एंड देन वैसे भी हमने दिस वे, वैसे भी लास्ट लाइन है, और हम वे ऑलरेडी पहले आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि दिस वे कहाँ पे होगा, वो यहाँ पे आ सकता है, राइट? बिकॉज यहाँ पे वो तरीका बताया हुआ है. सो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू पुट इट हियर. So let's see if the answers are correct. Yes, the pairs are correct. The answer for this one is correct. So we see, if you know the right strategies, we can easily solve our reorder paragraphs. And what are the strategies? The strategies for reorder paragraphs are, the first we have to find independent line. Then we can use BS strategy, which is brought to specific strategy. You have seen its usage today for finding independent line. Then CO strategy, chronological order strategy, LO strategy, logical order strategy, connectors, topical order strategy, AB strategy, SO strategy, subject object strategy, and last sentence rules. So these are the strategies which we have to use, or which we can use for solving our reorder paragraphs. We have just 2 minutes, and in first 30 to 60 seconds you have to skim the content. You can find independent line the way we did. Try to find conclusion line, but it is always optional. And once you have done that, once you have found the independent line, then apply the strategies to make pairs.
All the strategies which we teach to our students are validated and proven strategies. The proof is in the ticker below. You can see so many students of ours have achieved their target score. So if they can achieve, you can also achieve. And these are some of our recent success stories where students have scored 90, 87, 86, 82, 81. So if these can score, again I'm saying you guys can also achieve your target score in next attempt. If you have any question or doubts, or if you want to take online coaching or in-institute coaching, you can contact us on WhatsApp at 8699121121. And do not forget to subscribe to our channel because we post such informative videos on a regular basis. We give wings to your dreams.